Welcome to the next class, Interrogative Sentences. Past tense for passive voice. Part 3 of 3, Perfects. Number 3 for Interrogative Sentences. Methods. सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड आएगा, सवालिया अल्फाज आएंगे, क्यों, कहाँ और क्या। तो ये सवालिया अल्फाज हैं, क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं। और इसके बाद हेड आएगा, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा, मफूल आएगा जिस पर काम किया जाता है, ऑन विच एन एक्शन इज़ परफॉर्म। फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। तो मेहमानों के आने से पहले खाना क्यों लगाया गया था? Why had the table been laid, L-A-I-D, laid before the guests came? मेहमानों के आने से पहले खाना क्यों लगाया गया था? Why had the table been laid before the guests came? Hope you understand this. और खाना खाने से पहले दोस्तों को कहाँ बिठाया गया था? Where had the friends been seated before the meal? बिफोर द मील किसे कहते हैं? खाने को। तो खाना खाने से पहले दोस्तों को कहाँ बिठाया गया था? वेयर हैड द फ्रेंड्स बीन सीटेड बिफोर द मील, या फूड डिनर, जो भी खाना वगैरह हो। तो क्या तुम्हारे जाने से पहले करारदाद मंजूर हो चुकी थी? हैड द, अब ये जो क्वेश्चनिंग वर्ड थे इसमें क्या, क्यों, कहाँ नहीं आया, तो फिर जो क्या आ गया, क्या के लिए ये इसे ख़त्म कर देंगे और हैड और बाकी मेथड उसी तरह आएगा। तो हैड द रेजोल्यूशन या बिल भी कह सकते हैं, बिल बीन पास्ट बिफोर यू लेफ्ट। दोबारा से देख लीजिए। क्या तुम्हारे जाने से पहले करारदाद मंजूर हो चुकी थी? हैड द रेजोल्यूशन, या बिल भी कह सकते हैं, बिल बीन पास्ड बिफोर यू लेफ्ट, या हैड द रेजोल्यूशन बीन पास्ड बिफोर you left. Hope you understand. If you have some question, you can ask me in the comment box, and I hope you subscribe my channel.